Good morning to all students. Once again, welcome on online classes of class 10 maths. In previous lecture, we already discussed that the basic criteria of the similarity. How we will prove that the given two triangles are similar. That is using triple S similarity rule. Second is that SAS similarity rule. Third is that angle similarity rule. Now in today lecture we will discuss some important question. Now question is that in given figure CM and RN are two medians of triangle ABC and triangle PQR. So first of all students, tell to me that what is the concept of the median. Median का क्या concept होता है? Median divides the opposite side of the triangle into two equal parts. अपोजिट साइड्स को क्या करती है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. सो इफ सी एम इज द मीडियन, ए एम किसके इक्वल होगा? बी एम के. और ए एम को क्या राइट कर सकते हो? ए बी का हाफ. सेकेंड, आर एन इज द मीडियन, सो पी एन इज इक्वल टू क्यू एन. पी एन को क्या राइट कर सकते हो? हाफ ऑफ द पी क्यू. देन वी विल प्रूव दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन हियर गिवन. गिवन में क्या है? C M and R N are medians of triangle ABC and triangle PQR, and also given to you triangle ABC similar to triangle PQ. What we will prove here, आपको क्या प्रूफ करना है? Triangle AMC similar to triangle PNR. Second part is that CM upon RN is equals to AB upon PQ. And third part is that triangle CMB is similar to triangle RN. Now we will start proof. Now we know that if two triangles are similar, then their corresponding angles are equal and their corresponding side ratio are equal. So proof here, triangle ABC is similar to triangle PQR, so corresponding angles are equal and corresponding side ratio also equal. Now write down angle A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q, angle C is equals to angle R. Equation first, and second is AB upon PQ, BC upon QR, and CA upon RP second. Now what we are proving here, triangle AMC and triangle PNR, इनको similar proof करना है. So how we will prove that similar? Now AC upon PR is equals to AB upon PQ or not? AC upon PR AB upon PQ के equal है. From which equation? Using equation number second. AC upon PR equal AB को आप ये राइट कर सकते हो twice of AM, and PQ can be written as twice of PN. Cancel. So what we obtain here, AC upon PR is equals to AM upon PM. AC upon PR is equals to AM upon PN, and angle A is equals to angle P from equation first. So triangle, which triangle? AMC is similar to triangle PNR using
as a as root. Understand first part? Why we write down here AB is equals to twice of AM and PQ? Because CM is the median, and we know the concept of the median is that it divides the opposite side into two equal parts. So two triangles are similar. So if two triangles are similar, then their corresponding side ratio will come same. So corresponding sides are in equal ratio. Corresponding sides का रेशियो क्या बनेगा? सेम बनेगा. So now write down the corresponding side ratio same. AC upon PR, AC upon PR is equals to MC upon NR. सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है? CM upon NR is equals to AB upon PQ. ये हो गया. But AC upon PR is AC upon PR is also equals to AB upon PQ is equals to AB upon PQ. Give the equation number third and fourth. So from equation third and fourth, what we observing here is left hand side also AC upon PR, right hand side also AC upon PR. Left hand side में भी क्या है? AC upon PR. In equation fourth, left hand side also AC upon PR. So right hand side are equal or not? So क्या बनेगा? CM upon RN is equals to AB upon PQ. Hence, second part is completed. Now third part. Triangle CMB. Triangle CMB similar to that one. Now फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से देखो क्या रिजल्ट है? CM अपॉन NR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR. CM अपॉन NR AC अपॉन PR. We can write down CM upon NR is also is equals to BC, where BC upon QR, because AC upon PR किसके इक्वल है? BC upon QR. And angle B is equals to angle Q. And angle B is equals to angle Q from equation first. So triangle CMB is similar to triangle RNQ using which rule? As A as hence. So understand in that question what is given to? आपको given क्या है? In that triangle two triangles given है and their two medians are also given. After that we proved here the different things. Different things क्या है? Triangles को similar proof करना है. Then after their corresponding sides are in the same ratio. Then after we again prove that the remaining triangle are also same. Understand? So friends, that is very important question that is based on the median. Now second question देखो. Second question is that in the given figure, a figure is given to you. Name of the triangle is triangle QTR. Triangle QTR. In triangle QTR, angle 1 given and P is point also here. Point P and angle naming is also given to you. Angle 1 join P2S also. Will join P2S also. After that joining the P2S, that is point S, angle 2.
एंड गिवन क्या है आपको, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है, देन प्रूव दैट ट्राइंगल PQS is similar to triangle TQR. PQS को ट्राइंगल TQR का सिमिलर प्रूफ करना है. So how we will prove? Listen here, QR upon QS is equals to QT upon PR. एंगल 1 2 के इक्वल है. आपको क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल PQS and triangle TQR both triangles are similar. So how we will prove? Given राइट करो, गिवन में क्या राइट करोगे, इन ट्राइंगल QTR, QR अपॉन QS, QT अपॉन PR. Second is angle 1 2 equal. To prove what we write down, triangle PQS is similar to triangle TQR. Now we will start proof. In triangle QTR, listen all, in triangle QTR angle 1 is equals to angle 2. So side opposite to equal angle are also equal. Side opposite to equal angle are also equal. So angle 1 opposite to TR and angle, but आपको क्या चाहिए, आपको क्या गिवन है, QT अपॉन PR चाहिए. सो एंगल 1 के अपोजिट क्या है, ट्राइंगल QPR कंसीडर करो, QPR. सो एंगल 1 अपोजिट PR, एंगल 2 अपोजिट QP. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ गिवन क्या है, QR अपॉन QS, QT अपॉन PR. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ PR. पुट करो QR अपॉन QS. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QT? एज इट इज PR वैल्यू QP, QR अपॉन QS, QT अपॉन QP एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और नॉट. सो ट्राइंगल PQS is similar to triangle TQR or not using SAS रूल. किस रूल से है, यूजिंग साइड एंगल साइड रूल. बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. सो स्टूडेंट्स, इन दैट एक्सरसाइज है आपकी 6.3, many questions are given to you on the basis of the similarity and basically three types of similarity. Three types of similarity में क्या है, फर्स्ट ट्रिपल एस से प्रूफ कर सकते हो, सेकेंड साइड एंगल साइड से प्रूफ कर सकते हो, एंड थर्ड इज दैट एंगल एंगल और एंगल 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 से प्रूफ कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है दैट वेदर गिवन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय यूजिंग ट्रिपल एस. क्या गिवन ट्राइंगल ट्रिपल एस से सिमिलर हो सकते हैं? क्या गिवन ट्राइंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर हो सकते हैं? क्या गिवन ट्राइंगल एंगल एंगल से सिमिलर हो सकते हैं? सो ऑल स्टूडेंट, टुडे आफ्टर वाचिंग दैट वीडियो you will complete exercise 6.3 and in next lecture we will discuss some important question of exercise 6.3. then after we will start exercise 6.4. 6.4 is based on the area similarity theorem. complete किस पे बेस है? area similarity theorem पे बेस. then next lecture will prove that area similarity theorem also. So today all student, again I announce, after watching that video you will complete
exercise 6.3. Next lecture we will discuss 6.4. Thank you.